Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your social study teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 1, citizenship, and today is its 4th lecture. So my dear students, let's quickly look at today's student learning outcome that will be covered. Identify civic rights and responsibilities. We have already covered civic rights and responsibilities. Today, you will be able to understand the reasons why they may change over time. आपकी responsibilities और rights जो हैं how they change over time, यानी कि वक्त के साथ साथ कैसे आपकी responsibilities जो हैं वो change हो जाती हैं, आज हम इस बारे में जानेंगे. So the skills that will be developed are recognition, comparison and analysis. So my dear students, let's quickly refresh your knowledge. Quickly list some civic rights. आपने अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में ऑलरेडी बहुत सारा पढ़ लिया है, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, अभी भी हम बहुत सारी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ चुके हैं. क्विकली लिस्ट सम राइट्स. नंबर 1, सिक्योरिटी. Yes, very good. Clean water, availability of electricity, healthcare facilities, education. These are some of the basic rights of a citizen. Now let's move forward towards list some civic responsibilities. Very good. Think about them quickly. Very nice. Okay, let's quickly revise. Responsibilities: casting vote carefully, maintaining peace, planting trees, following the rules, maintaining cleanliness around you. So these are some basic responsibilities of a citizen. Okay, what can you do to make your society a better place to live? When you know all of your rights and you follow all your responsibilities, that's how you can make your society a worth living place. So let's quickly move forward and look at the Islamic perspective. Indeed, in the creation of the heavens and the earth and the alteration of the night and the day are the signs for those of understanding. So my dear students, जो लोग समझदार हैं, जो लोग इल्म रखते हैं, जिनके पास समझ बूझ है, वो जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जो जन्नत बनाई है, अल्लाह ताला ने जो ज़मीन बनाई है, आसमान बनाया है और जो दिन रात का आना जाना है, उसके अंदर अक्लमंदों के लिए जो हैं वो निशानियां हैं और हमें वो निशानियां समझनी चाहिए और हमें अल्लाह ताला के ऊपर पूरा जो है ईमान लाना चाहिए. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards the activity. Take a blank colored sheet. Write caption age of responsibility. Under this caption, you have to write your responsibilities that have changed over time. Write down how responsibilities change as we grow. चलें, अब आपको क्या करना है, आपको एक पेपर लेना है और उसके ऊपर आपको एज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है. ठीक है, कौन सी एज पे आपके पास कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी. यू हैव टू थिंक अबाउट इट एंड देन यू हैव टू राइट डाउन. ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देने लगी हूँ. बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉशिंग हैंड्स एट एज 3, यानी कि आप जब 3 साल के थे तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी. हमेशा मम्मा कहती थी हाथ धोने हैं, खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं, खाना खाकर हाथ धोने हैं, सोकर उठकर हाथ धोने हैं, बाहर से आप आए हैं तब आपको हाथ धोने हैं. सो दिस वाज योर ओनली मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि आप जो हैं वो अपने हाथ धोएं. इसके अलावा मेरी मदर जब इफ़ आई रिमेंबर, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती थी कि आई मस्ट ऑलवेज कीप वेयरिंग माई शूज़, डू नॉट टेक ऑफ माई शूज़. ठीक है, तो ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी कि जूते नहीं उतारने और इसके अलावा हाथ धोने हैं हमेशा. So this was my responsibility at the age of 3. And allowance, okay, tying shoes at age 4. और जब आप 4 साल के हो जाते हैं तो you become responsible to tie your shoes yourself. ठीक है, shoe laces जो होते हैं वो आप खुद बांधना सीख लेते हैं. You become responsible of that. Now an allowance at age 7. जब आप 7 years के हो जाते हैं तो आपको जो है वो कुछ पैसे मिलने लग जाते हैं और आपको फिर उनको केयरफुली यूज़ करना होता है. सेटिंग द टेबल एट एज 5 and 6. जब आप 5 साल के हो जाते हैं तो मदर को थोड़ा बहुत हेल्प आउट करते हैं. यू पुट ऑन द ग्लासेस एंड प्लेट्स ऑन द टेबल. सो दिस बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वॉशिंग ओन हेयर एट
एज 6, ठीक है। और जब आप 6 साल के हो जाते हैं तो खुद आप नहाना धोना शुरू कर देते हैं, वॉशरूम खुद जाना शुरू कर देते हैं, यू बिकम रिस्पॉन्सिबल ऑफ दैट। तो आप देखें कि विद द टाइम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, विद द एज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो रही हैं। तो आपको इसी तरीके से एक शीट लेनी है और एज वाइज, मे बी यू आर, हाउ ओल्ड आर यू, 9 years old और 10 years old, तो आपको फ्रॉम 3 और 4 years से अपनी आज तक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वन रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ईच एज आपको लिखनी है। फिर आपको ये समझ में आ जाएगी कि विद टाइम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो जाती हैं। इसकी एक एग्जाम्पल ये भी है कि आपकी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं घर में, आपके पेरेंट्स की कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो विद एज एंड विद टाइम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज. So be sure to list future responsibilities a child may look forward to, like caring for a pet, reaping the lawn, cycling or higher studies. So इसके बाद आप ये सोचें कि जब आप थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो आपकी क्या क्या और responsibilities जो हैं वो add on हो जाएंगी. So you can pause the video and you can start thinking. You have to make a page like this और colorful सा ज़रा आप अपनी responsibilities के बारे में लिखिएगा कि how they change over time. I hope you have finished this activity and you must have enjoyed it, and now you can have a look at how your responsibilities have changed with the time and with the age. Okay, my dear students, now let's move forward. Change in rights and responsibilities. आपकी वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज हो जाती हैं. यू लिसन टू अदर्स. इसके अलावा आप जो है घर से बाहर आना जाना शुरू कर देते हैं. राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन पास्ट एंड प्रेजेंट टाइम, ठीक है. पहले ज़माने में आप कैसे, आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता था, लोग आपस में मिल बैठ के बात करते थे, आपस में जब भी मुलाकात होती थी तभी जो है हम बातचीत कर पाते थे, एक दूसरे से मिल पाते थे और अपने जो भी आप सोच रहे हैं, जो आप कहना चाहते हैं, तो हम उस वक्त जो है अपनी बात डिलीवर करते थे. तो यू कैन हैव अ लुक कि जब मिल बैठते थे सिर्फ तब जो है आप अपनी बात जो है वो एक दूसरे को पहुंचा पाते थे. दिस इज द पास्ट टाइम, ठीक है. पुराने ज़माने में ऐसे होता था. नाउ अ डेज व्हाट डू यू हैव, ठीक है. हियर आई विल चेंज द कलर. ओके, नाउ इन द प्रेजेंट टाइम, ठीक है. अब मैं इसको पर्पल कलर से प्रेजेंट टाइम को मैंने जो है वो सर्कल किया है. अब प्रेजेंट टाइम की पिक्चर ये आपके पास है. अब आपके पास डिफरेंट गैजेट्स हैं, आपके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, पाम टॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, एंड दिस इज़ हाउ यू इंटरेक्ट विद ईच अदर. अब तो मिलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. द अदर पर्सन हु इज़ इवन इन ऑस्ट्रेलिया एंड यू आर सिटिंग इन पाकिस्तान, ही इज़ जस्ट अ वीडियो कॉल अवे. आप वीडियो कॉल करते हैं, मोबाइल सामने है, लैपटॉप सामने है, एंड वी कैन हैव अ फेस टू फेस टॉक. और फिर आप अपना जो है बात अपनी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, अपनी ओपिनियन दूसरों तक पहुंचा सकते हैं. तो आप देखें कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और राइट्स जो हैं वो कैसे प्रेजेंट और पास्ट में भी चेंज हो रहे हैं विद द टेक्नोलॉजी, ठीक है. Okay, my dear students, now is the time for your reading. Quickly open page number 7 in your books. Okay, this is the last paragraph of this page और हमने क्योंकि rights and responsibilities के बारे में पहले से ही पढ़ा हुआ है, let's start reading from there. Here is an interesting fact. These rights and responsibilities change over time. So my dear students, जो भी हमने rights और responsibilities के बारे में study किया था previous lectures में, lecture 1 और lecture 2 में, जिसमें हमने study किया था कि हमारे rights हैं to cast vote, to have security, to have healthcare facilities, to have education, clean water, cleanliness around us, so medical facilities. So these are all the rights. Similarly, there are some responsibilities. तो एक interesting fact इसके बारे में ये है कि these rights and responsibilities change with the time. Okay, let's have a look now. It is not wrong to say that responsibilities mostly change. The reason is that we live in a world that is growing rapidly in the field of technology. In the past, people only talked to or got in touch with each other when they met. But now, the situation is different. There is
social world in which we interact by several means of communication, such as Facebook, Gmail, WhatsApp, Twitter, and etc. In such a situation, people should behave nicely to others who are connected to them via internet. Some people often say negative. Okay, my dear students. So my dear students, अब हमने इसमें ये पढ़ा कि हमारी जो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो इनके बारे में हमने पढ़ा था, दे चेंज. मोस्टली राइट्स डू नॉट चेंज, क्योंकि ह्यूमन बींग्स पास्ट में भी आपके जैसे ही थे, प्रेजेंट में भी आप जैसे हैं, फ्यूचर में भी आप जैसे रहेंगे. तो दे हैव मोस्टली द सेम राइट्स. ठीक है, कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए. मे बी द टेक्नोलॉजी मे वेरीज, लेकिन राइट्स सिमिलर रहते हैं. बट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे चेंज, दे समहाउ चेंज. तो वो कैसे चेंज होती हैं कि पहले जब भी लोग मिलते थे आपस में, तो वो पास्ट में, पुराने ज़माने में, तो वो सिर्फ बैठकर बात करते थे व्हेन दे यूज्ड टू मीट. लेकिन आजकल के दौर में द मीडिया एंड द टेक्नोलॉजी इज सो फास्ट कि आपके पास द अदर पर्सन हु इज far far away from you, he is just or she is just a call away. ठीक है, आप उनको कॉल करके, वीडियो कॉल करके आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं. लेकिन इन कम्युनिकेशंस को हैंडल करने का, इन गैजेट्स को हैंडल करने का, इंटरनेट को हैंडल करने का, सोशल मीडिया को हैंडल करने के कुछ एथिक्स हैं. ठीक है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस कम्युनिकेशन को, हम इस टेक्नोलॉजी को पॉजिटिवली यूज करें, इंस्टेड कि हम इसका कोई नेगेटिव यूज करें. सो बी पॉजिटिव व्हेन एवर यू यूज अ टेक्नोलॉजी. तो देखें, अब ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई. तो देखें किस तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो विद द टाइम भी चेंज हो रही हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द रैप अप. The rights and responsibilities change with time due to the change in the world. So my dear students, आपकी rights और responsibilities जो हैं वो with the time, with the technology जो है वो थोड़ी बहुत change हो जाती हैं. Okay, my dear students, now is the time for a practice. तो आपके पास एक worksheet है जो आके आपकी teacher आपको printed form में देंगी. Change in civic rights and responsibilities. You have read about civic rights and responsibilities and the reason for their change over time. Now take help from your book and complete the given table. For example, we only enjoy the right to privacy at the home in the past, but now we have the rights at a global and digital level. Complete the table by writing about the rights which have changed. Also mention the reasons behind it. Okay, my dear students, आपके कुछ rights हैं जो कि with the time change हो गए हैं. एक right जो है वो आपका लिखा हुआ है, जैसे कि प्राइवेसी. पहले ज़माने में आपको प्राइवेसी सिर्फ घर में मिलती थी, इसके अलावा ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी. बट राइट नाउ आपको बहुत सारी चीज़ों में प्राइवेसी चाहिए, क्योंकि हम ग्लोबली जब कनेक्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो आपको आपके घर में बैठे हुए जो है वो आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं. सो देयर कम्स अ चेंज. तो आपकी जो है वो द रीज़न बिहाइंड द चेंज आप ये लिखेंगे कि क्योंकि टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई, तो दैट्स वाई now I need privacy at my Google account, at my Facebook, everywhere. Okay, so this is how you can take help from the book and you can write how your responsibilities have changed with the time. Past में कुछ और थी, present में अब कुछ और हैं, और उनका reason क्या है change होने का. Okay, so my dear students, you can fill this worksheet with the help of your book and you can also take help from your teacher. Now let's move forward towards a project. This is your homework. Okay, what you will do in this project, it is given on page number 8. You learned about the civic responsibilities. Go outside your house with parents, elder siblings and survey your area. Keenly look out for the problems in your area and resolve them, at least one. Make survey report on it. Write your report. What was the problem? What was the reason behind it? How did you resolve it? Take picture while performing the activity and paste it in your survey report. Okay, my dear students, अब आपको एक survey report बनानी है. मैं आपको इसमें help करूंगी कि कैसे बनानी है. आपकी कुछ civic responsibilities हैं. अब आपने करना क्या है कि with your father, your mother or your elder sibling, you have to go out and within your society, you have to look around for the problems that the people are facing, which your society has, और आपको वो problems लिखनी है.
उसके बाद आप किधर रिपोर्ट करेंगे उनको, उनका सोल्यूशन क्या है, और उनमें से आपके उनको सोल्यूशन भी लिखें और कोई एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व भी करें और ये भी बताएं कि आपने उसको रिजॉल्व कैसे किया. Take pictures while doing the project and paste them in your survey report. So now here is your survey report. You have to write down your name and your class, civic responsibilities survey report. So three of the problems are written on your screen which are very important like education, water sanitation and cleanliness. So my dear student, आपको जो है पहले education में आप बताएं कि number of schools आपके area में कितने हैं, फिर आप बताएं कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल नहीं जा रहे, ठीक है, और फिर एक सोल्यूशन भी उधर बताएं कि इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए कि हर बच्चा स्कूल जा सके. नेक्स्ट, वाटर सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, येस और नो. आपके एरिया में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर आता है, येस लिखें या नो लिखें. अगर कोई प्रॉब्लम है वाटर के अंदर वो भी लिखें, उसका सोल्यूशन भी आगे बताएं. नेक्स्ट, क्लीनलीनेस, डेली ट्रैश पिकअप होता है आपके एरिया में, येस और नो. अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डर्टी एरिया है, वो भी लिखें और उसका सोल्यूशन बताएं कि इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए. देन अंडरनीथ जो प्रॉब्लम, इनमें से कोई एक प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा है और जो आप इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम आपने कैसे रिजॉल्व की वो आपने लिखनी है यहाँ पर. ओके, वेरी इजी. मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया देती हूँ कि मेरे एरिया में क्लीनलीनेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ट्रैश पिकअप्स जो हैं वो डेली नहीं होते या बहुत क्लीनली नहीं होते. इसका बहुत इजी सा सोल्यूशन ये है कि हमें सोसाइटी अथॉरिटी होती है एक, हमें उनको कंप्लेंट डालनी चाहिए, रिटन एप्लीकेशन होती है, राइट एन एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ योर फादर और योर मदर एंड देन गिव इट टू द सोसाइटी अथॉरिटी एंड देन दे कैन लुक अप टू दिस मैटर. So this is how you can resolve the issue without any hurdles. So my dear students, you can pause the video and you can complete the survey report. From here we will move forward. Let's quickly move forward. So today's class is finished and in the next class we will study about the ethics of being digital citizens when connected online and how to deal with the difference of opinion. So my dear students, जैसे कि आपने अभी हमने पढ़ा था कि हम कम्युनिकेशन जो है आजकल टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत फास्ट हो गई है, तो दैट्स हाउ वी बिकम डिजिटल सिटीजन्स. तो नेक्स्ट क्लास में हम अबाउट डिजिटल सिटीजनशिप पढ़ेंगे और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं बीइंग अ डिजिटल सिटीजनशिप, बीइंग अ डिजिटल सिटीजन, और कैसे जो है हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को हैंडल करना चाहिए. वी विल लर्न अबाउट दैट. Until then, keep everybody around you safe. Have a good day and Allah Hafiz.